Okay, we'll start with radial probability distribution curves. इसका मतलब क्या है radial probability distribution curves? Suppose an orbital है, मान लेते हैं orbital है, along the radius. If I'm going along the radius, what is the variation of probability? मतलब इस particular point पे, ये वाला particular point पे, what is the probability of finding the electron? मतलब ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? We will be comparing different points. Along the radius, how is the probability of finding the electron is varying? किस particular point पे ज्यादा है, किस particular point पे कम है? Okay. Finally, we will decide a point where the probability of finding the electron is maximum. Okay. We are interested only in finding the probability of finding the electron along the radius. क्योंकि इस particular radius के along कैसा रहेगा और एक line draw किया तो इसके along भी वही रहेगा ना, there won't be any difference. So you can extend it to the entire shell. Okay. वो basic idea है. करते करते आप लोगों को clarity आएगा. First of all, we will start with psi. What is psi? Psi is simply the representation of electron as a wave. So psi is basically a mathematical equation. उससे हमको ज्यादा information नहीं मिलता है, उसको solve करने से कुछ मिलेगा. Okay. Psi is simply representation of electron as a wave. But if you do psi square, if I do psi square, I'm applying mod because ये जो psi है, it is in terms of complex numbers I. What is the value of I? Root minus 1 है ना? Root of minus 1. उसको square किया तो क्या आएगा? हमको -1 आएगा ना? So a square of a number can be negative, provided it is a complex number. So psi जो है, psi is in terms of complex numbers. इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? उसको mod apply कर रहा हूँ. I am taking only the positive value. Mod psi square जो है, it gives you information about probability density. ये important है everyone. Psi itself has no meaning because it is simply a wave function, or it is a representation of electron as a wave. But if you do psi square will give you information about probability density. So probability density से फायदा क्या होगा तो वो देखते हैं. First of all, tell me the formula for mass density. Mass density is nothing but mass upon volume. Mass. Density is equals to mass upon volume करके बोलते हैं ना. Population density is nothing but population upon volume. Mass density is nothing but उसका mass upon volume. So if you want to find mass, आप लोग करेंगे क्या? You will multiply that mass density given into volume. Similarly, if you want to find probability in a given volume, mass find करने के लिए उस particular volume का density into volume कर रहे हैं ना. Similarly, probability find करने के लिए you will multiply probability density with volume. ये समझ में आया ये logic? Mass density is mass upon volume. So if you want to find mass of a given volume, you will multiply its density times over a particular volume. Similarly, probability density is nothing but probability upon volume. ये जो probability density है, this is nothing but probability upon volume. Probability density is given by the function psi square. Before going into probability density and its analysis, आप लोग को थोड़ा बहुत integration के बारे में idea होना चाहिए. And why do we do integration? ये पता होना चाहिए.
उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सपोज लेट अस टेक ए स्फीयर। What is the volume of the sphere? Four upon 3 pi r cube. Pi r cube. Okay. Volume of sphere is 4/3 pi r cube. We will try to derive this formula with the help of integration. सब लोग देखो। Suppose I'm taking a sphere. Okay. ठीक है। If I'm taking inside a sphere, I'm taking a shell. अभी ऐसे सोचो, this sphere is nothing but onion. Okay. Onion में क्या होता है? There are different layers. If you want to form the entire onion, क्या करना पड़ेगा? You need to add all the layers. If you are adding all the layers, finally you will be getting the onion. Okay. Similarly, ये जो particular sphere है, this sphere, can I consider it is made up of several shells? Yes, sir. I'm taking a shell and I'm taking the radius of, or the thickness of the shell. Very small. Suppose इसका जो radius है shell का, it is at a distance of r. It is at a distance of r, and its thickness, the thickness of it is dr, and I am considering the thickness as very small. इस particular shell के what is the surface area? What is the surface area of a sphere? ये जो shell है, shell भी spherical geometry होगा ना? But I'm 4 pi r square. 4 pi r square. 4 pi r square. Okay, very good. So shell का surface area is 4 pi r square. अभी ये जो particular shell है, इसके लिए कुछ volume भी होगा? Can you tell me Yes, the sir. volume of this particular shell? ये जो particular part है ना, area, और else मैं shade करता हूँ। ये जो green region है ना, उसका volume कितना है? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube क्यों रहेगा? This is like a ring. R minus. उसका radius R1 minus कितना है, sir? R2. 4/3 r minus dr. ओके आप लोग ठीक है आप लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं एवरीवन। इन लोग का भी आइडिया देखो। द रेडियस ऑफ इसका रेडियस आउटर वाला का रेडियस क्या है? इट इज r प्लस dr एंड अंदर का रेडियस क्या है? r है। सो ये लोग क्या कह रहे हैं? द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रीन रीजन इज नथिंग बट 4/3 पाई r प्लस dr whole cube minus 4/3 pi r cube. ऐसा ही कुछ कह रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Volume of shell. This is the volume of shell you are talking about. ये सही बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, exactly सही है, but और एक लॉजिक देखो। Suppose if you have a line, if you have a line of length L and if you are adding these lines, ऐसे ऐड करते जा रहे हैं आप लोग, सारे लाइंस का लेंथ L ही है। ओके एंड ऐसा कितना ऐड किया? यू आर एडिंग सपोज B lines. Okay, so what will be the total area? It will be L L plus into B. plus L plus L plus so on. कितना टाइम से?
b times, or you are B times. doing simply L into B? L into B. Yes, And the sir. reason for this is all the lengths are same. ये सारे लेंथ सेम है, इसलिए L times B कर लिया, you got the area. यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? Again, listen. The radius taken is R and the thickness is dr. I am taking the dr as very, very small. If dr is very small, I can consider R plus dr almost equal to R only. Yes, Okay, sir. R plus dr almost R ही consider कर सकता हूँ. इसलिए इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा? rather than, very important logic है ये, वॉल्यूम ऑफ शेल, इसमें क्या हो जाएगा? It will become 4 pi r square, which is the surface area, into thickness कर लो direct, 4 pi r square dr. Is this point clear? Sir, please explain again. देखो, I am adding several L units. I am adding several L units. So L plus L plus L plus L plus total surface area क्या हो जाएगा? इसका area क्या होगा? It will be L plus L plus L so on B times, or it is simply L into B. Similarly यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक शेल है और शेल को ऐड करता जा रहा हूँ. Okay, ऐड करते जा रहा हूँ such that its thickness became dr, and dr value is very, very small. So I can approximate R plus dr almost equal to R. मतलब क्या है? सारे शेल्स इधर जो भी है उन सबका रेडियस मैं R ही मान सकता हूँ. जैसे इन सारा लाइंस का लेंथ जो L माना मैंने, एंडिंग में L into B कर लिया, इधर जो भी शेल्स मैं बना रहा हूँ, एक शेल और एक शेल ऐड करके टोटल थिकनेस dr बनाना पड़ेगा ना मुझे. Yes, ओके, समझ में आ रहा है? So thickness times surface area. Thickness times surface area is nothing but volume of that particular shell. And यहाँ पे ये करना valid है because our assumption is the thickness is very, very small. So approximately क्या हो जाएगा? उस volume क्या हो जाएगा? It is 4 pi r square times its thickness. Is this logic clear, everyone? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubts? Yes, sir. Doubt है? Okay, ठीक है. So if you want to, this is the volume of the shell, which is having a radius r and thickness dr. It is 4 pi r square dr. ऐसा बहुत सारे shells को मैं ऐड किया तो क्या होगा? Will I get the entire sphere? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so बहुत सारे shells, उन सारे shells के बीच में the factor which will be different is if their radius, ये जो r है वो change होता जाएगा. और r कहाँ से कहाँ तक जाएगा? r will range from, integration मतलब यही करना है. You need to add the volumes of all the shells, whose radius will vary from 0 to capital R. Let us take the radius of the sphere as capital R. Okay. So if you adding the volumes of all thin shells, adding volumes of all thin shells whose radii range from 0 to capital R, we get volume of shell, or sorry, we get volume of sphere. Okay, which is nothing but integration. So if I want to calculate volume of sphere, it is nothing but 4 pi r square dr. You need to integrate this. Integrate मतलब सबको add करना पड़ेगा. You need to integrate this from 0 to capital R. आप लोग फिजिक्स में सर ने ये फॉर्मूला बताया होगा. What is integral x par n dx? xn plus 1 by n. X raised to n X plus bar 1 n by plus n to n plus plus 1 divided by upon n n plus plus 1. 1. And you need to substitute the limit Plus na? c.
plus c plus, if there are no Limit. limits. If you have limits, you will be substituting the limits. So integral 4 pi r square dr क्या होगा? 4 pi into r power 2 plus 1 upon 2 plus 1, 3 and the limits are 0 minus to capital R. 0 to R. So it is 4 pi into r power 3 upon 3, 0 to capital R. minus Substitute करो limits. It is 4 pi r cube upon 3 minus 4 pi 0 cube upon 3. 0 आया क्या है? 4 by 3 pi r cube 4 ना? pi R cube. Yes, sir. minus 0. Okay. So this is Yes. how we derive volume of the sphere with the help of integration. Everyone understand हमने इधर क्या किया है? What we have taken is, we have taken an element. That particular element, if I am extending it from 0 to capital R, I am able to form the sphere. What is the element chosen here? What is the element we have chosen? It is thin shell. That thin shell extended from 0 to capital R is resulting in the formation of sphere. और जो particular shell है, उसका surface area क्या होगा? If the radius is r, its surface area 4 will pi be r r square. square. If its thickness is dr, and I'm considering dr to be very, very small, its volume will become 4 pi r square dr. So dr. adding the volumes of all thin shells will give you the volume of the sphere. That addition process is nothing but integration. You need to do integration from 0 to capital R. So ये जो 4 pi r square dr volumes shells जो भी है, उन सबको ऐड करते जा रहा हूं मैं. ऐड करते जा रहा हूं कहां तक? 0 से लेके कैपिटल R तक. समझ में आया? Yes. Okay. Next. Again you have sphere. Again you are having a sphere. इसके अंदर फिर से एक शेल ले लो आप लोग. You are having a shell. Thickness dr, and the radius of it is r. So this value will become r plus dr. If I am saying density of sphere is equals to some rho. Density of sphere is rho. I will ask you some questions. Please इसका answers बताओ. What is the surface area of the shell? 4 pi r square. Surface area of shell. 4 pi r square. into dr. I am just Just surface area. what is the volume of shell? 4 pi r square 4 dr. pi r square into 4 dr. by 4 4 pi pi. r square times dr. Can you tell me the mass of the shell? What is the mass of the shell? What is density? Rho. Mass upon volume. Mass upon volume. So उस particular shell का mass चाहिए तो उस particular shell का density Volume चाहिए. density. The density Volume. and volume 4 pi R square. 4 pi r square r dr. square 4 dr. by 3. Okay. अभी आप लोग everyone, the density is given rho. मतलब the density is uniform. कोई भी शेल पकड़ो आप लोग, वहां पे डेंसिटी रो ही है. सो कोई भी शेल का मास क्या होगा? रो इंटू 4 pi r square dr ही होगा. सो इफ आई वांट टू फाइंड मास ऑफ स्फीयर, इंडिविजुअल शेल्स का मास फाइंड करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, which is rho into 4 pi r square dr, and the integration is from 0 to capital R. 0 to r.
So Yes. it will be rho times 0.3. rho तो एक constant हो गया ना, rho into 4 डायरेक्ट लिख दो, rho into 4 by 3 pi r cube Yes, sir. लिमिट सब्स्टिट्यूट करके. Hmm. अभी इस पर्टिकुलर केस में क्या है, द डेंसिटी इज अ कांस्टेंट, मतलब each and every shell is having a uniform density, but whenever I take the density, और जो density है, it is not a constant, it is some function. The density of sphere is given as some rho upon r. Definitely that r should not be equal to 0. थोड़ा r का वैल्यू रहा तो the density is rho upon r. मतलब क्या है, it is very dense at the center, and as you go away from the center the density is decreasing. Okay, अभी cricket bat सोचो, the cricket in cricket bat the mass density is not uniform. different areas पे और जो particular density है वो different रहता है. Similarly अभी मैं क्या ले रहा हूँ, I am taking a sphere whose density is not uniform. In different regions the density is different. So इस particular case में what will be the mass of the shell? Rho by r into 4 pi r Mass dr. of thin shell becomes rho by r times 4 pi r 4 square pi dr. r square dr. So Yes, individual एक shell का mass देखना पड़ेगा आप लोग को, and in order to get the mass of the sphere you need to add the entire mass of all the shells. Okay, एक shell का mass कितना हो गया, so इसको multiply किया तो it is rho times 4 pi r dr. 4 pi r dr. Yes. So what will be the mass of sphere then? Rho 4 pi r square by 3. Integral 0 to capital R 4 pi r dr times rho. Okay, समझ में आया ये, क्योंकि थिन शेल का मास जो है इट इज रो इनटू 4 pi r dr. सो इसका इंटीग्रेशन किया तो इट विल बी 4 रो 4 pi r square upon 2 0 to capital R. तो कैन आई से 2 to cancel हो जाएगा, इट विल बी 2 pi rho capital R square. Yes, sir. समझा? इसके जैसा ही हम क्या करेंगे, now this is how we found the mass of the sphere if you are given mass density. What is probability density? Everyone listen, आ गया हम. What is probability density? It is probability upon volume. It is probability upon volume. So if you want to find probability, what are we finding? We are trying to find the probability inside a thin shell. Probability will be equal to probability density times volume. Again, I'm taking a sphere. अभी इसके अंदर, ये शेल के अंदर the probability density is given by psi square ना, और जो particular shell है और shell के अंदर probability density is given by psi square. What is the volume of the shell? 4 pi r square dr. 4 pi r Yeah. square times dr. So can you tell me, if I want to find the probability inside the shell, the probability of finding the electron inside a given shell, क्या हो जाएगा उसका 4 pi probability r square density? dr per psi square. Okay, probability square density upon times 4 pi r square dr. ये समझ में आया? Yes, sir. So if you want to find the probability of finding the electron inside this particular shell, total probability, क्या करना पड़ेगा? You need to integrate all probabilities from 0 to capital R. Yes. Probability
in the sphere will be equal to integral 0 to capital R psi square times 4 pi r square dr. आया समझ में? And how did we define orbital? We defined orbital as the region where the probability of finding the electron is maximum. So आप लोग ये sum किया तो ये 0 to capital R psi square 4 pi r square dr किया तो it has to be in the range 0.95 or more. That is taken as orbital ना? ये extra information है, वो 0.95 सब जरूरत नहीं. We need to understand the probability of finding the electron in a sphere. The probability of finding the electron in a sphere is psi square times 4 pi r square dr thin shell में. Yeah. What is the probability of finding the electron in a thin shell? It is psi square times 4 pi r square dr. If you want to find the probability in a sphere, because each and every shell overall यहाँ से लेके यहाँ तक extend होता है ना. If you want to find the probability of finding the electron in that particular shell or in that particular sphere, it is 0 to capital R 4 pi r psi square times 4 pi r square dr. Okay. So ये solve करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? You need to know the function psi square. So, but हमारे syllabus में तो psi square का function available है ही नहीं. Okay. So we will be qualitatively understanding this, or we will be understanding this with the help of graphs. We won't be solving that psi square क्योंकि psi square का function हमारे पास नहीं है और इतना बड़ा integration हमको आता भी नहीं है. ऐसे छोटे-छोटे integrations कर लेंगे. Integral x power n dx ऐसा कर लेंगे. But if it is involving complex numbers and ये बहुत बड़ा functions, इससे हम कर नहीं पाएंगे. Okay. So we will be analyzing this qualitatively. Everyone, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. समझेंगे अभी. Don't worry. हमारे पास, give me 2 minutes. We have graphs for psi. NCERT textbook आप लोग अगर देखा तो you have graphs for psi, and ये जो psi का graphs रहेगा it will be different for different orbitals. मतलब psi, the psi for 1s, the psi for 2s, the psi for 2p. So each and every electron will be having a definite psi. Electron is nothing but the orbital. Okay. So हर कोई orbital के लिए एक psi का function रहता है. Similarly psi of 3s etc. So हमारे syllabus में you have the graphs for 1s and 2s. Okay. You need to remember that. You need to remember those graphs. वो कहाँ से आया है वो हमारे syllabus में नहीं है. Exactly वैसा ही क्यों दिख रहा है. But you need to remember the graphs. The graph for 1s. This is the graph for 1s. This is psi of 1s. The graph for 2s looks something like this. This is psi of 2s. ये वाला quadrant positive है, ये वाला quadrant negative है. Okay. अब ये जो psi है, does psi have any meaning? No. No, right?
psi is simply the representation of electron in the form of a wave. psi square जो करेंगे हम, रेडियल पे वैल्यू। एक मिनट, give me 2 minutes. psi square जो करेंगे, psi square will give you probability density. So we will try to plot with the help of psi. We will try to plot psi square. Mod psi square of 1s, mod psi square of 2s. What is psi square? This is probability density. अभी क्या करना है हमको, psi square ना, so हर एक पॉइंट को स्क्वायर करते जाओ, हर एक पॉइंट को स्क्वायर करता गया तो the nature of the graph doesn't change. The nature of the graph will remain same, but what will happen is ये जो values है, the values will be increased. Square करते जा रहे हैं ना आप लोग, so the nature of the graph will remain same. Exactly जैसे पहले ड्रॉ किया था वैसा ही दिखेगा, but the scale will be changed. Okay? इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इफ यू आर डूइंग स्क्वायर ऑफ इट, जो नेगेटिव वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, बट इट विल बी इंक्रीज्ड, द वैल्यूज विल बी इंक्रीज्ड, ये जो पर्टिकुलर स्केल है इट विल बी चेंज्ड, बट द नेगेटिव वैल्यूज विल बिकम पॉजिटिव. सो ग्राफ कैसे दिखेगा इसका, पॉजिटिव। यहाँ तक ऐसा होगा, इसके बाद द ग्राफ विल चेंज, will become positive. जो नेगेटिव वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो गया, दिख रहा है? यस। ओके, बट हमको क्या चाहिए, we require probability, we require the graph of probability. We are seeing probability distribution curve, मतलब how the probability is varying along the radius. We need probability which is nothing but psi square times 4 pi r square dr. Yes, sir. Everyone again, ये जो psi है, psi is a function of r, theta and phi. Angular. Okay, so you can further write this as psi of r times some psi of theta phi. You can divide that two parts. One is the radial part and the other is the angular parts. So we are just plotting psi of r. Okay, we are interested in this for finding R. probability distribution along the radius. Yes. Probability distribution along radius. Okay, so psi of r ही plot कर रहे हैं हम, ये सारा जो graphs है, it is psi of r, it is not the entire psi of r. I hope this is clear. Yes, Everyone, sir. सभी लोग है ना Yes, sir. साथ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so you have psi of 1s graph, psi of 2s graph. Psi as such it won't be giving us any information, so we are doing psi square which will give us probability density. Probability density का graph plot किया हमको, probability क्या होता है, it is 4 pi r square times dr. So you need to multiply this psi square graph with 4 pi r square dr. ये जो dr जो है it is a constant है, और thickness जो है हमेशा उतना ही लेंगे. Everyone, this dr part is a constant. So एक बार 4 pi r square graph plot किया, उसको dr multiply किया तो क्या होगा, again all those values will be shifted, but the nature of the graph won't be changing ना. Yes, sir. Okay, एक minute. So if you are taking another graph, y is equals to x square जो graph होता है, y is equals to x square. This is how it looks. This is the graph. Parabola. Y is equals to x square. Y is equals to 4 pi r square. वो भी क्या होगा, you are just multiplying a constant ना,
वो भी वैसा ही दिखेगा, या y is equals to 4 pi x square, y is equals to 4 pi x square into dx, dx भी क्या है, एक कांस्टेंट ही है, so उसका नेचर भी क्या होगा, सेम वैसा ही दिखेगा ना. The nature Yes, of the sir. graphs won't be changing. The nature of the graphs won't be changing. You will just have a variation in its scale. Is this clear? Okay. अभी ग्राफ क्या है, I am plotting, I'm also plotting I'm overlapping two graphs. This graph is for y equal to 4 pi r square. R square. ये भी y is equals to 4 pi r square. What will be the resultant of these two graphs? The resultant of these two graphs मतलब क्या है? You need to multiply psi square with 4 pi r square. Everyone concentrate. Concentrate. ये जो psi square graph है, it is a decreasing graph. Psi square of 1s, it is a decreasing ना. And ये जो Yes, y is equal to 4 pi r square, it is increasing graph. Yes, sir. yes, sir. Decreasing है, ये increasing है. I am multiplying a decreasing graph with an increasing graph. So the overall result can be decreasing, can be increasing. It depends upon whichever graph is dominant. Suppose this is decreasing at a faster rate, but this is increasing at a slower rate. So if you multiply these two, the overall value will be decreasing. Everyone concentrate. Listen, इधर लॉजिक क्या है, ये घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है. सपोज ये तेजी से घट रहे हैं, ये बहुत धीरे से बढ़ रहा है. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ओवरऑल डिक्रीजिंग आएगा. ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये बहुत धीरे से घट रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीजिंग आएगा. दिस इज द लॉजिक. इज द लॉजिक क्लियर? Yes, sir. If you are having two different graphs of two different natures, one is increasing, one is decreasing, whichever is dominant, the net graph will look that way. अगर डिक्रीजिंग डोमिनेंट है तो ओवरऑल डिक्रीजिंग दिखेगा, इंक्रीजिंग डोमिनेंट है तो ओवरऑल इंक्रीजिंग दिखेगा. ओके ओके. ये जो पर्टिकुलर साइज स्क्वायर का ग्राफ है ना, इट इज ऑफ द नेचर e पावर x. एग्जैक्टली e पावर x नहीं है, इट इज अ फंक्शन ऑफ e पावर x. आई कैन से इट इज अ फंक्शन ऑफ e पावर x. अगेन नो नीड टू वरी सो मच अबाउट दिस. ये e पावर x है, ये x स्क्वायर ग्राफ है. इन दोनों का नेचर्स क्या होता है, x स्क्वायर जो ग्राफ होता है, इनिशियली इट इज डोमिनेंट, मतलब वैल्यूज आप लोग 0 2 ऐसे बढ़ाते जाओ, x स्क्वायर का जो वेरिएशन है, इट विल बी मोर व्हेन कंपेयर्ड टू e पावर x. e पावर x इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ. ये जो कोरोना वायरस का जो ग्रोथ रेट है, इट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल. मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जैसा लगता है या धीरे धीरे घटते जैसा. दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ ना. स्टार्टिंग में धीरे धीरे घटेगा, बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस व्हाट विल हैपन, द इंक्रीज विल बी मोर. स्टार्टिंग में केसेस हमको 1000 आने के लिए कितना टाइम लगा, अभी एक घंटे में क्या हाफ एन आवर में 1000 आ रहे हैं ना. एवरीवन, that's the nature of the exponential graph. Initially starting में it increases or decreases at a slower rate, but as the time progresses the growth will be exponential. ऐसा exponential मतलब बहुत धीरे से तेजी से बढ़ेगा या तेजी से घटेगा. Same is the case with psi square. Psi square is a function of e power x, or it is an exponential graph. Starting में धीरे से घटता है, but as the time progresses, मतलब time progresses नहीं, as the radius is increased, it will be decreasing at a faster rate, क्योंकि decreasing function है ना. y is equals to x square. x square ग्राफ देखा तो क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर किया तो at the start this will be increasing at a faster rate, but later on it will be increasing at a slower rate. ये इंटरसेक्शन तक मान लेते हैं, ये इंटरसेक्शन तक initially this is dominant, यहाँ पे
initially this particular part is dominant, this is less dominant. So overall if you are multiplying these two, what will be the nature of the graph? It will be an increasing graph, increase होगा. समझ में आ रहा है? बाद में क्या बाद में क्या होगा? दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, थोड़ा बड़ा ये पीक थोड़ा ज्यादा ही ड्रॉ कर लेते हैं. बाद में क्या होगा? The e power x will become dominant or psi square will become dominant, so it will start to decrease. This will be the graph. This will be the graph of probability. देखो, as you go away from the nucleus, initially the probability at the nucleus is 0. ये वाला part nucleus है ना, the probability at the nucleus is 0. As you go away from the nucleus, the probability is increasing. एक particular point तक increase हुआ. After that it starts to decrease. After that it will become 0. 0 मतलब क्या हो गया? It is the end of the orbital. यहाँ पे orbital खत्म हो गया. Okay, orbital के अंदर as you go away from the nucleus, the probability is increasing. एक particular point पे maximum हुआ, उसके बाद decrease होता गया. आया समझ में? Yes sir. Okay, ये वाला पार्ट देखते हैं. This is for 1s. एक बार 2s का ऑब्जर्व करते हैं. टू एस में क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेट. ये वाला पार्ट पे देखो, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. आउट ऑफ दिस टू विच इज मोर डोमिनेंट? Increasing function. ओके, द इंक्रीजिंग फंक्शन इज मोर डोमिनेंट. तो क्या होगा? पहले इट विल इंक्रीज. It will increase. उसके बाद this will become more dominant. ये जो e power x है, it will become more dominant. So क्या होगा? It will decrease. Yes sir. Yes, sir. It will decrease. उसके बाद देखो, both of them are increasing. Both of them are increasing. इसलिए क्या होगा? It will start to increase. Increase. And the peak will be more. यहाँ पे जो peak है, वो ज्यादा रहेगा क्योंकि दोनों increasing हो रहे हैं. Okay? यहाँ पे फिर से क्या है? This will be more dominant. Okay? So it will again start to decrease. Decrease. This will be the graph. This will be the graph. समझा? Yes. Sir. Yes, sir. Okay, एक बार फिर से ग्राफ को एनालाइज करते हैं. This particular graph is obtained by multiplying these two graphs. In this particular graph, this is a decreasing function. This is an increasing function. At the start, for lower values of r, psi square जो है, it is less dominant when compared to x square. So if you are multiplying these two, as x square is an increasing function, we got the overall graph as increasing. As the radius value increases, e power x become more and more dominant, or else this will be decreasing at a faster rate when compared to its increase. So overall हमको decreasing आएगा. So this is the probability distribution for an electron present in 1s. As you go away in the orbital, suppose यही वो orbital मान लेते. This is 1s orbital. As you go away from the nucleus, the probability increases and then it will decrease. यहाँ पे 0 हो गया. So ये particular area है. इस particular shell में the probability of finding the electron will be highest. क्योंकि वहाँ पे maximum है ना. Okay. And वो जो particular radius रहेगा,
यहाँ से यहाँ तक. Okay, this particular radius, this is called as radius of maximum probability. Radius of maximum probability. एंड इसका वैल्यू अगर 1s के लिए हाइड्रोजन एटम में फाइंड किया तो, इसका वैल्यू 1s के लिए हाइड्रोजन एटम में फाइंड किया तो that value came out to be 0.529 एंगस्ट्रॉम्स. ये वैल्यू कहीं पे देखा हमने? Yes. This is the Radius same. of Bohr, sir. This is the same value which we obtained in Bohr's theory. But Bohr ने क्या कहा? It will be rotating at a fixed distance of 0.529 angstroms. But if you observe the probability, 0.529 angstroms के right hand side में भी है, left hand side में भी है. So electron यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा. But most of the time it will stay. Most of the time it will spend on this particular shell. Okay, so वो बात तो बोर का जो मॉडल है more or less वो ठीक है, because इससे भी हमको वैल्यू क्या आया? 0.529 एंगस्ट्रॉम्स ही आया. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. एंड Yes, इस sir. पर्टिकुलर केस के लिए 2s के लिए ये जो पर्टिकुलर r है, दिस विल बिकम द ROMP. ROMP मतलब क्या है? रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. You should not take this as ROMP. This should be taken as ROMP. Okay, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है. This is the maximum probability. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. और एक पॉइंट है 1s के केस में. 1s के केस में do you find any point inside the orbital where the probability is becoming 0? यहाँ पे न्यूक्लियस है, so यहाँ पे ऑब्वियसली 0 रहेगा probability. यहाँ पे ऑर्बिटल खत्म हो गया, so यहाँ पे भी probability 0 रहेगा. इनके बीच में कहीं पे भी 0 दिख रहा No, है क्या? sir. No, sir. बट No, 2s sir. को 2s को देखो सभी लोग. इफ यू टेक 2s, यहाँ It is पे ऑर्बिटल becoming- स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ऑर्बिटल खत्म हुआ, बट बीच में एक पॉइंट ऐसा है, बीच में एक पॉइंट ऐसा आया हमें where the probability is 0. Probability of finding the electron is 0. Such a point is called as node. What is node? Node is a point where the probability of finding the electron is 0. 0. As this particular point is appearing along the radius. Along the radius, एक particular point पे the probability of finding the electron is 0. Such a node is called as radial node. node. Along the radius, the probability of finding the electron is 0. Hence, it is called as radial node. Radial node. Clear है? 1s के लिए radial nodes कितना है? 0. 0. 2s के लिए radial nodes कितने हैं? 1. 1. 1. 1. Okay. N minus 1. The number of radial nodes is given by formula. N minus 1. N minus 1. अगर नहीं आता है तो मत बताओ प्लीज. It is n minus l minus 1. The number of radial nodes is given by formula n minus l minus 1. 2s के लिए radial nodes कितने हो जाएंगे? For 1. 2s, it is 2 minus 0 minus 1, which is equal to 1. Half knowledge is very dangerous. You need to have complete knowledge or you need to have no knowledge. Half knowledge is very dangerous. I am again warning you. Okay, so the number of radial nodes is given by formula n minus l minus 1. So 2s के लिए 2 minus 0 minus 1. 1s के लिए कितना हो जाएगा? It is 1 minus 0 minus 1, which is 0. इसलिए आप लोग को कुछ नोड नहीं दिखा. समझ में आया? ओवरऑल? Yes, sir. Yes. ओके. सबसे पहले कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं. What is meant by node? The region
or space in an orbital where the probability of finding the electron is 0. Okay. The number of radial nodes. Radial node matlab along the radius at one particular point the probability of finding the electron is becoming 0. Number of radial nodes is given by formula n minus L minus 1. Is this clear? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. If you have any doubt, please ask me now in these graphs. In the examination, the questions will be given as which of the following is a plot for psi square? Which of the following is a plot for psi? Which of the following is the plot for probability? So probability के लिए पूछा तो ये ग्राफ आपको देख के मार्क करना पड़ेगा. If they are asking for psi square, ये वाला ग्राफ. If they are asking for psi, ये वाला ग्राफ. So क्वेश्चन में क्लियरली देखो या ग्राफ्स में क्लियरली देखो psi दिख रहे या psi square दिख रहे या psi square into 4 pi r square दिख रहे. Okay, so accordingly mark the graph. ये 3 ग्राफ्स में से कोई भी पूछ सकते हैं कैसा भी ग्राफ. अभी ये जो पर्टिकुलर ग्राफ्स का एप्लीकेशन लेके we will try to draw the graph for 2p. Suppose 2p का आप लोग को probability distribution curve ड्रॉ करना है. Probability distribution curve. क्या होगा? What will be the number of radial nodes for 2p? 0. It will be 2 minus 1 minus 1, which will be equal to 0. So graph कैसे दिखेगा? Positive. Graph exactly जो 1 है उसके जैसा ही दिखेगा. This will be the graph for psi square of 2p into 4 pi r square dr. Okay. Suppose आप लोग को 4d का निकालना है. नहीं और एक प्लॉट करने के लिए 4p का निकालना है. What will be the number of radial nodes? 1 minus 1. 4 minus 2. 1 minus 1 2. minus 1, which is equal to 2. So आप लोग को क्या दिखाना है? In the graph, you need to show in the graph you need to show 2 nodes. So यहाँ पे एक पीक स्टार्ट करके एक हुआ, 2 हुआ और एक पीक. Okay. And always as you go away from the nucleus, peaks बढ़ेंगे क्योंकि 4p जो है it will start from the center, but 4p थोड़ा बड़ा है ना, 4th शेल है. So दूर जाते जाते वहां पे उसका probability ज्यादा रहेगा, पास में ही नहीं ज्यादा नहीं होगा. Okay, so for 4p this will be the radius of maximum probability. This will be ROMP. These are 2 radial nodes. एक नोड है, इधर एक नोड है. Okay, these 2 are 2 radial nodes. So directly ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. No need to know the graphs of psi square. ये सब एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं. एक बार ये आया ना, इसके रेफरेंस में बाकी सब ड्रॉ करते जाएंगे. आया समझ में? Yes, sir. Okay. Please go through today's lecture again if you are having any doubt. ये जो particular part है, this is important and this is of extreme importance for advanced. Okay, JEE मेंस और नीट के रेस्पेक्ट में आज के लेक्चर में जो पढ़ा उस पे क्वेश्चंस थोड़ा कम रहेंगे. मतलब आज के लेक्चर के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस क्या आएंगे? ये जो ग्राफ्स डायरेक्टली पूछा जाएगा.
नो एनालिसिस. नेक्स्ट लेक्चर में इनफैक्ट अभी नोट्स का पूरा हमने खत्म नहीं किया. देयर इज सम नोट्स कॉल्ड एंगुलर नोट्स और प्लेनर नोट्स. टोटल नंबर ऑफ नोट्स के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा. उस पर्टिकुलर सेक्शन से जेई मेंस में और नीट में क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, आने का चांस है 99%. इस वाले सेक्शन जो भी ये एनालिसिस जो है, दिस एनालिसिस इज कंप्लीटली फॉर जेई एडवांस्ड. जेई Hello, sir. Hello, sir. Hello. it got disconnected. Give me 2 minutes. जेई एडवांस का नाम लेते ही डिस्कनेक्ट हो गया ये. डर गया जूम भी. What I'm saying is this particular section, the derivation, the analysis, everything. Okay, the analysis part is important for JEE Advanced. The results, which is number of radial nodes, what is meant by a node, okay, and how to plot these graphs. Directly graph पूछा जाता है. That is part of mains and NEET. Okay, please go through the lecture again. In case of any doubts, feel free to contact me. In next lecture, we will wrap up the atomic structure chapter. Thank you.